Morning, good morning, everyone. Thank you. Thank you for joining. Good Morning. morning. Yes. So, guys, difficult times yesterday. About the flight crash, plane crash for Ahmedabad and London route. So it was quite heartbreaking to see that. We also traveled through airlines, and it's quite dangerous now. The Boeing, okay, it was if you see, it was the 41,000 hours. It wasn't driven. It was 11 years old flight, and no. Difficult I would say difficult time for the people who have lost their lives and their families, but if you read that news properly, though the airline stocks were down, now how it is impacting the financial markets. So it is not the airline stocks will get impacted. Okay, that was down because obviously Indigo also has Boeing, SpiceJet also has Boeing flights. India usually uses the Boeing flight or the Airbus. Now, if you see this, the crash likely triggered claims to 150 million of insurers and reinsurance. Now, the problem is the companies, Tata, AIG, ICICI Lombard, New India Insurance, all these companies were the insurers, and they might impact a lot because of this heavy loss. Flights also have a huge insurance cost. The flight itself is always insured, even the passengers insured. So this will impact the situation. So Gaurav, you have sent the news, you should have written it this way rather than writing it the other way around. That airline stocks focus. So it doesn't mean that all airlines will crash. Okay. It was a one-time event. Now that one-time event will impact all these insurance companies. So it is always, something tragedy happens. Now, obviously, we don't like all these things to happen, but this is companies which gets impacted. So if you know, or no, there was a when there was a terrorist activity which was done in 9/11, the US, the World Trade Tower crash. At that time also, though, nothing happened to the markets at that moment of time. But when it came out that it was an terrorist activity, the stock market declined. So so obviously this all events also have an impact on the markets. Now you don't know now specifically. Whatever I know is this insurance companies will have a huge impact. Boeing obviously it is not listed in India, but wherever it is listed, it will have an impact because obviously many flights of Boeing, India, all the it's a global company, so every air company have this Boeing flights. So that stock might get impacted because of this news. See, nothing has happened as such, but it is the future demand will get impacted. So you should not look at one time event that okay, it has crashed, so now the stock has fallen. So it is a one time event. It is not all the Boeings will get impacted. The future orders of Boeing might get impacted because of all these things. Okay. Okay. So Ashutosh, can you start with the news? Uh, the major news Yes, which came sir. up today. Yeah. So, sir, the retail inflation has declined 200 basis point to 2.8% in May, and it was majorly driven by a 770 basis point decline in food inflation. So, the food inflation has 40% weight in the CPI index, and it has declined to 0.9%. And it was done by 13.7% decline in vegetable prices, 8.2% decline in pulse prices. However, edible oil prices has increased 17.9%, and the reasons are contracted oilseed sowing and rising global prices and imports. And the core inflation, which is excluding food and fuel prices, has increased 120 basis point to 4.2%, and it was majorly driven by inflation in health, which was 4.3%, personal care, which was 13.5%, and transport services, where inflation was 3.8%. And if we look at the rural inflation, it was 2.6%, whereas the urban inflation was 3%. So this indicates that there will be a faster pickup in the rural demand than the urban demand. And also, many economists has flagged that food inflation can increase in the coming month due to excessive rainfall in shorter period and also uneven distribution of the rainfall, which may impact crop yields.
Okay. So this inflation, you mean it will not be sustainable? Yes, sir, it is highly dependent on the monsoon. If monsoon is uneven and if excessive rainfall occurs in certain region in a shorter period, then the crop yield may get impacted. But this is happening, there is uneven rainfall across the country now. And Yes, yes, sir, and also yeah, there is a decline, there is a halt of monsoon in June. there is a halt of. Sorry, I didn't get you. What you said, Ashutosh? Halt of monsoon in the June. There's a halt of monsoon. Plus, if you, Halt of monsoon in June. yeah, Yes, sir. Delhi has reached its highest climate temperature of 52 degrees. If you have seen that news, guys, so it's Delhi has been given a red alert for the heat waves, extensive heat waves in Delhi. So anyone from Delhi? 51 degrees, yeah, 52 degrees they have reported yesterday. So that's quite huge, and it is, means on the north side of India. So, quite a concerning sign for the crops, because in that heat, crops cannot survive, or they require a lot of water for that. Radhika, can you tell your news on the palm oil? What happened to the palm oil? Yes, sir. Yeah, Radhika. Good morning, everyone. So, India's edible oil imports fell by 21.5% in May Radhika, your 2025. voice is not clear because of the earphones. Can Yes, sir, you? just correct. Yeah, no, it's not clear. So, I rejoin again. No, I think there's a problem with the earphones. I think the voice is clear. India's edible oil. Cannot hear. Is it clear now? No. Fine. Just a minute, sir. Sir, is it clear now? It is clear now. What did you do? So I joined by phones. Acha, okay. Yeah, clear now. Yeah. Okay, so I was saying that India's edible oil imports fell by 21.5% in May 2025 to 1.1 million tons. This decline came from lower palm and sunflower oil imports during the month as the pipeline stock was already high and global prices were actually very volatile. Also, the palm oil imports between November 2024 to May 2025 rose to 3.3 million tons, which is a jump of 33.2%. This increase was due to refiners refilling their stocks and amid the competitive pricing that is currently going on. Also, palm oil made about 43% of India's edible oil imports in the first 7 months of FY25 is actually down by 1500 BPS basis points year on year. On the other hand, soybean and sunflower oil market share increased by 57%, increased to 57%, up by 1500 basis point, which was due to the price dynamics that are currently going on and the changing procurement strategies of the customers. Also, that currently that import duty cut to 10% by the government also helped the increase in the imports this year. This move was done by the government to encourage the import of crude oil over refined oil so that the local refining gets boost. Input duty cut on crude edible oils. Okay, fine. So what is the crux, if I want to know, because your news was okay, but I didn't get it exactly what you want to try. Oh yeah, so how it is impacting? So, as the palm oil imports have surged and the import of the this sunflower and the soybean oil have decreased rather, but palm oil in our country has dropped, and the soy and sunflower has gained. So, though the palm oil currently there was an article in Mint, the palm oil prices are currently low. That's why I guess the Imports have increased.
Yeah, that's why the imports have increased. But contradictory to that, currently currently the citizens, Indian citizens uh, being more aware of that the palm oil is not actually good for the health, and they are moving towards the soybean and sunflower oil. Hmm. So this may lead to the customers changing their preferences towards this soybean and the sunflower oil rather than palm oil goods. Okay, so but palm oil has increased and soya bean you said has decreased, no? Yes, sir. Imports in the import side, palm oil has increased and soybean and sunflower oil has decreased. Decreased. Ha. But the palm oil share in the country have decreased by 15%, and the soy and sunflower oil has shares has have increased. Acha, okay, okay. Palm oil, Hmm. the share of soya bean and sunflower has increased in India current as compared to palm oil. Yes, sir. अच्छा ओके हाँ वो समझा नहीं न्यूज से ओके फाइन हाँ हाँ. ओके um Sejal, what can you tell your news on Skoda? Yes, sir. Good morning, everyone. So, Skoda target is 70% of the बात Indian करना है sale. तुम्हें रीड नहीं करना है तुमको मुझे बात करना है Yes, डोंट sir. ट्राई टू रीड इट हाँ Yes, sir. Skoda is planning to double digit its domestic car market share from 1.8% to 3% by the end of 25. ओके The company see the growth potential in automatic transformation car, the currently up by 25% of Indian car market. And Skoda Auto Indian brand already contribute 50% of Skoda's sales in India. This goal is to increase by 70%, offering a Euro automatic car technology and offered like a option like a Kaila price from 10 lakh rupees. Uh, this big opportunity in a 4M SUV segment. The manual car domestic contribute 65 to 70% of the 4 SUV segment. The Skoda see the chance of shift the buyers to the automatic cars. This led to increase in female car ownership uh, and make the strong growth in Indian car market. हिंदी में बोलो वापस मुझे कुछ नहीं समझा तुमने वापस रीड ही किया सब I didn't understand anything. And by the way, when you write it, ये चार चार बार एक ही चीज क्यों लिखते हैं? Market share to grow from 1.8 to 1 by year, and वापस Skoda plans to double its market share from ये एक ही चीज दो बार क्यों लिखी है? तुमने पहले के न्यूज में भी दो बार लिखी है एक ही चीज. सिर्फ वो हेडिंग है तो फिर वो हेडिंग नहीं तो इसमें नहीं हेडिंग है आना तो चाहिए. हेडिंग में ही लिखो ना तुम रीड क्यों करवा रहे हो हम तो आर्टिकल तो ये तो तुम्हारा वो खाली वो कर तुम स्पेस बढ़ा रहे हो तुम्हारे वर्ड का ओके सर. हर एक स्पेस पता है जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हो हर एक लाइन का पैसा होता है एक ही चीज बता तुम कोई बता रहे हो ना मुझे कुछ तो एक ही चीज बार बार क्यों बता रहे हो ओके सर. एक एक हाईलाइट में और एक सेंटेंस में वापस बताओ ये क्या किया है स्कोडा ने सर स्कोडा का डोमेस्टिक कार मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग प्लान किए हैं विच इज 1.8% को इंक्रीज करेंगे 3% से तो ये क्या है बाय द स्कोडा एंड टारगेट ऑफ. 70% ऑफ इंडिया सेल्स फ्रॉम ऑटोमोटिव्स ये क्या है सर वो ये जहाँ पे स्कोडा और एसयूवी सेगमेंट में ग्रोथ देख रहे हैं नहीं तो ये क्या है 70% किसका ऑफ इंडिया सेल्स मतलब इन एसयूवी सेगमेंट से. नहीं मैं समझा नहीं स्कोडा टारगेट 70% ऑफ इंडिया सेल्स फ्रॉम ऑटोमेटिक्स मतलब किसका 70% उसका कंपनी का यस सर. बट क्या आई एम नॉट गेटिंग दिस नंबर 70% नंबर किस बात का है तुम फाइनेंशियल मॉडल में बताओ ये कहाँ पे डालोगे नंबर ये तुम्हारे पीएनएल स्टेटमेंट में 70% कहाँ पे टोटल रेवेन्यू का ऑटोमेटिक्स ऑलरेडी 50% ऑफ स्कोडा सेल्स गोल इज 70%
तो फिर ऐसा ये ओपनिंग होना चाहिए ना, समझता है कि मैं 70% टारगेट, 70% ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑटोमेटिक्स। वी व्हाट इज ऑटोमेटिक्स? व्हाट इज सर ऑटोमेटिक्स? उनके ऑटो सर ऑटोमेटिक कार आती है ना, वो विदाउट गियर वाला। हाँ, तो 70% फ्रॉम ऑटोमेटिक कार्स लिख सकते हो ना तुम यहाँ पे, या फिर बोल सकते हो कि सर ये क्या है ऑटोमेटिक। व्हेन यू राइट इट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें लिखा है क्या है ये। स्कोडा टारगेट 70% सेल्स फ्रॉम ऑटोमेटिक्स। ऑटोमेटिक कार्स। ऑटोमेटिक, हाँ तो तभी समझेगा ना क्या लिखा है कि 70%, तो 70% सेल्स ऑफ इंडिया क्या है, मतलब क्या समझेगा 70% सेल्स ऑफ इंडिया? इंडिया की बात कर रहे हैं ना। स्कोडा टारगेट हम्म। 70% ऑफ इट सेल्स फ्रॉम ऑटोमेटिक कार्स। ऑटोमेटिक कार्स। हाँ, एंड आइस 3% मार्केट ओके शेयर। सर। अभी ये भी क्यों लिखना है तुमने, यहाँ पे लिखा है ना यस सर। मार्केट शेयर टू ग्रो। तो यही हेडिंग हो गया ना ओके। ऑटोमेटिक कार। दिस इज द हेडिंग, स्कोडा है 70%। फिर इट, तो यही हेडिंग होगा, इट प्लान्स टू इंक्रीज इज मार्केट शेयर फ्रॉम डबल, वही इट प्लान्स टू लिखा है यहाँ पे, इट प्लान्स टू डबल इट्स डोमेस्टिक मार्केट शेयर फ्रॉम 1.8% बाय द एंड ऑफ। और मैंने बोला था FY 25 नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, FY 25। और एंड है मतलब कैलेंडर ईयर हो गया, ओके। एंड हो रहा है ना कैलेंडर ईयर 25। Skoda plans to double its market share from 1.8% to 3% by end of market share. The company sees a growth potential in automatic cars, currently make up 25% of the India's car market. ये डेटा पॉइंट हो गया। अच्छा, तो ये भी है, स्कोडा plans to target 70% of India sales from automatic cars, currently at 50%। देख सकते हो ना, कितने कितने चीजें, यस सर। इतने बार 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 वही कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह लिख रहे हो तुम। फिर राइट दिस आएगा कॉलेज स्टूडेंट कि बस पेज भरना है इसके लिए भर दिया, 0 मार्क्स। ऐसा किया तो, या प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज तुमने 2 बार लिखी तो यू हैव, अदर ऑल्सो गाइज, इफ यू राइट द सेम थिंग 2 टाइम्स, इट इज, वो पढ़ना ही लोग बंद कर देंगे कि तुमने दो दो चीजें एक ही बार दो दो चीज लिख रहे हो। तुम वो ऐसे नहीं है स्कूल में कि पेज भरने के लिए जितना पेज भरोगे उतना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जितना, व्हेन द स्मॉलर यू राइट द बेटर इट इज। एंड स्मॉल भी इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, इट शुड बी अ पैराग्राफ पार्ट। एंड स्कोडा, वापस स्कोडा ऑटो इंडिया ब्रांड, कितने बार स्कोडा ऑटो लिखोगे? पता चला ना स्कोडा की बात कर रहे हैं। अब बस वापस है, स्कोडा मैंने यस ऑलरेडी सर। कॉन्ट्रीब्यूट 50% स्कोडा सेल्स इन इंडिया, मतलब एक हेडिंग में लिख रहे हो, एक लाइन में लिख रहे हो, द गोल इज टू इंक्रीज 70%। बस यही चीज सिर्फ अलग थी पूरे इसमें। अभी ये क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत है क्या, ऑफरिंग ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल ऑप्शन लाइक काइलैक। तो ये इसका एक पॉइंट बोल सकते हो तुम अगर बोलना है तो। ओके, तो ये पॉइंटर्स में है। हाँ, तो ये पॉइंटर्स में आ गया कि क्या कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक में, क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ काइलैक विच इज प्राइस एट 7 लाख। अब ये क्यों लिखने के, ओके। यूरोपियन ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल ऑप्शन, तो दे हैव एन अफोर्डेबल ऑप्शन ऑफ ऑप्शन इन ऑटोमेटिक कार्स लाइक काइलैक विच इज प्राइस एट 10 पॉइंट, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है न्यूज, यू हैव टू मेक योर ओन न्यूज। बिग अपॉर्चुनिटी इन 4 व्हीलर सेगमेंट, वुमेन बायर्स, क्या समझू मैं इससे? व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? बिग सर अपॉर्चुनिटी। हाँ, सर ये स्कॉडा ने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में वुमेन मोस्टली प्रेफर करती है ऑटोमेटिक्स कार। हाँ, तो कैसे तो, समझेगा मुझे तो ये? सेंटेंसेस होना चाहिए ना, हेडिंग है ना तुम्हारा। यस सर। लेड टू इंक्रीजिंग फीमेल कार ओनरशिप इन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स, वही है ना, बिग कार अपॉर्चुनिटी एज ओनरशिप शिफ्ट्स टू वुमेन बायर्स। खुद के भी तो वर्ड्स ओके आए ना सर। इसमें। वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किए तो फिर मैंने तुमको क्यों रखा है, फिर वो तो मैं भी रीड कर सकता हूँ। AI मुझे तुमसे अच्छा लिख के देगा, उसको मैं बोलूँ कि इसको मेरे को हम समराइज करके दो तो। यस। तुमने जो बोला उसमें मुझे कुछ भी नहीं समझा, तुमने जो बोला वो।
सॉरी अभी सर। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन। तुमने अभी ये लिखा है, अभी इसका क्या इम्पैक्ट, क्या ये न्यूज़ तुमने लिखा, व्हाट इज द इम्पैक्ट? सर ऑटोमोबाइल्स एसयूवी सेगमेंट में इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे मतलब बाकी के कॉम्पिटिटर्स के एसयूवी सेगमेंट पे इम्पैक्ट करेगा ये। तो जहाँ कौन पे से कार है, स्कॉडा। कौन से सॉरी कार सर। है कोडा के इसमें, कौन से कार है कोडा के इसमें? ये नहीं पता। Guys, anyone? Now with this news, what is the impact? Skoda is targeting to double its market share. तो अगर इसका market share बढ़े तो किसी ना किसी का कम होगा. Now Skoda has car like, if you know, Kailak and Kushaq. वही है ना दो उसके, उसका Slavia है. These are the only three cars that they make. So which companies will get impacted? So if they are planning to increase, means others decrease होगा. तो किसका decrease होगा सबसे पहला? Who is in that segment? हाँ, mid size SUV is correct. Honda is there. कार्तिक, बीएमडब्ल्यू कैसे आ गया? वोक्सवैगन, स्कोडा इज नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ बीएमडब्ल्यू. Mahindra is also good. महिंद्रा, बट महिंद्रा के एसयूवी थोड़े महंगे आते हैं ना स्कोडा से. आई थिंक द थार एक आता है, ओके थार इज द वन, बट मेजरली महिंद्रा इज इनटू वो स्कॉर्पियो एंड एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 300. अच्छा हाँ सॉरी, एक्सयूवी 300 है, करेक्ट, ओके. So guys, what is happening is, since now Skoda is targeting to increase its share, so probably in this segment, there are cars like, so ये पता होना चाहिए ना, this is like general knowledge because auto numbers we are putting on a daily basis. तो हमको पता है कि गाड़ियों में ये सब 4 सी big opportunity in सब 4 मीटर segment. तो 4 मीटर segment में Hyundai की आती है which is Venue, किया की आती है which is your सेल्टॉस नहीं, सॉरी कौन से है वो, सोनेट. टाटा की आती है नेक्सॉन, मारुति की आती है ब्रीजा. ओके, दिस आर द 4-5 कार्स विच कोडा विल बी टारगेटेड. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट कुशाक, तो कुशाक में देयर इज हुंडई क्रेटा, उसमें तो बहुत सारे है, क्रेटा है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज में दिस क्रेटा, देयर इज सेल्टॉस, देयर इज मारुति ग्रैंड विटारा, महिंद्रा की भी थार आती है वो इसमें. बट महिंद्रा थार इज एक्चुअली डिफरेंट. एक्सयूवी 300 कैन बी एन ऑप्शन, प्रॉब्ली वो वही रेंज में आती है, वो साइड से वो इसके सोनेट के रेंज में जाते हैं, ब्रीजा के रेंज में. सो वी हैव टू सी, अभी स्कोडा बोल रहा है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटो नंबर्स वी हैव टू सी वेदर हाउ इज द स्काईलैक डूइंग, बिकॉज इफ स्काईलैक इज डूइंग गुड तो ये सेगमेंट में प्रोबेबली द कार्स व्हिच इज विल हैव अ लोएस्ट इम्पैक्ट. अभी नाउ वेन्यू इज द वन व्हिच इज द हाईएस्ट सोल्ड मॉडल फॉर Hyundai. तो Honda is the cutthroat competition for Kailak. Now, I have not seen the car Kailak कैसा है, but Skoda is offering, वो जाता है I think on road ही 15-16 पे चला जाता है वो. तो वो एक प्रॉब्लम है उसमें, because Sonnet comes at around 3 lakh, sorry, Venue comes at around 13 lakhs, the top end variant जो automatic है. And I'm not sure, I have not seen this car, I have yet to see this. इस कार वो क्रॉस साइरस करके भी एक आया है फॉर किया, that is competition for smaller hatchback, premium hatchback. तो अगर किसी, you have time, go to this showroom and go as a buyer and come up with a news कि why is this, why is Skoda so much confident about doubling its market share. अगर Skoda is not listed, but अगर चलो ये listed होता तो मैं तो पहले जाके देखता कि ये जो बोल रहे हैं ना, is it worth, according to me, see I am not saying according to the market because I am a car enthusiast, according to me is it a good option. तो एक काइलैक में जब हम बात करते तो काइलैक और वेन्यू में क्या फर्क है, काइलैक और सेल्टॉस में, हमारे सोनेट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीजा, व्हाई विल पीपल प्रेफर काइलैक ओवर ब्रेजा और नेक्सॉन, क्यों करेंगे ऐसा? इज इट वर्थ, खुद तुम्हारा क्या एनालिसिस है इसमें? इट इज नॉट अबाउट यू गोइंग राइट और रॉन्ग. यू माइट लाइक द कार, आई माइट नॉट लाइक द कार, और आई माइट लाइक द कार, यू विल से अगेन सर आप गलत बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, इट्स टोटली फाइन, बट यू शुड हैव अ व्यू ऑन इट. सो आई विल गिव एन टास्क, जाओ वीकेंड को ना, वीकेंड को या कभी वीकडे में टाइम मिला, गो टू अ स्कोडा शोरूम एंड फाइंड आउट, गो लाइक अ बायर. ऐसा मत बोलना मैं रिसर्च करने आया, वो भगा देगा उधर से. गो लाइक एन बायर, टेक योर फ्रेंड विथ व्यू, एक हाथ फ्रेंड को लेके, 2-3 मत जाना, एक हाथ फ्रेंड को लेके जाना. एंड गो देयर एज अ बायर दैट वी वांट टू बाय अ कार, क्या क्या प्राइसिंग है,
go to Skoda showroom, go to Hyundai showroom, go to Sonet ka showroom, go to Maruti Brezza, Tata Motors and your Brezza, Maruti showroom. सब गाड़ी का लाओ, टेस्ट ड्राइव लो, लुक एट द फीचर्स, कितने की आती है. एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग ऑटोमेटिक कार्स, तो ऑटोमेटिक ही पूछना, बिकॉज देयर और भी मॉडल्स आते हैं. तो जस्ट टॉक अबाउट ऑटोमोटिव सेगमेंट and how much it makes. Currently it makes 25% of the Indian car market. So this data we have got today, that I will put this in the group. Currently the automatic markets makes around 25% of the total cars sold in India. This is a good data according to the in context of our research. If you are talking of automobile segment, it's good that so it is good to say that we have these numbers ki automatic cars India mein kitna hai. Because when they say that there is a big opportunity in SUV segment, specifically when women are driving, so probably automatic car share in India should increase. And I will say automatic is the top variant of any car. जाके जरा देख के आना, usually automatic is always the top variant. वो बेस में नहीं आती, at least in this kind of cars. थोड़े लग्जरी में आई थिंक क्रेटा एंड वो सेगमेंट में आ जाती है. ऑटोमेटिक स्टार्ट फ्रॉम बेस वेरिएंट ओनली, बेस या मिड वेरिएंट, बट प्रोबेबली ऑटोमेटिक आर 1 लाख एडिशनल कॉस्ट एडिशनली फ्रॉम द मैनुअल वेरिएंट. तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या फर्क है दोनों में. तो इट विल इंक्रीज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनीज एज वेल. तो ये न्यूज में कुछ था नहीं, बट व्हाट आई वाज लुकिंग एट दिस कि ये 25% मार्केट शेयर मुझे नंबर मिला. फिर ना अगर स्कोडा बोल रहा है कि काइलैक इज डूइंग गुड, इफ काइलैक इज डूइंग गुड, सो विच विल नॉट परफॉर्म. एंड काइलैक सच में इतना अच्छा है, रिव्यूज तो अच्छे आए हैं. ऑटोकार एंड ऑटो पंडित, सॉरी ऑटोकार एंड वो मोटर ऑक्टेन पे दे हैव गिवन अ गुड रिव्यू ऑफ दिस. बट ऑब्वियसली पर्सनली जाके भी देखना है कि वो प्राइस पॉइंट है क्या. तुमको अगर बाय करना होगा 10 लाख की, तो विल यू बाय अ काइलैक और विल यू बाय अ सोनेट और ब्रेजा और अ नेक्सॉन? मुझे तो नहीं लगता गिवन द प्राइस पॉइंट, बट हाँ स्कोडा इंडियंस डू प्रीफर. एंड फिर ये कैसे समझेगा? नेक्स्ट मंथ ऑटो पंडिट्स में वी विल फाइंड. ये साल आया क्या आशुतोष, तुमने देखा क्या नंबर आया काइलैक के? काइलैक के नंबर शायद एक तो चेक कर. आई थिंक वन सेकेंड ना, कुशल हैज डन इट. लेट मी सी गाइस, जस्ट अ मिनट. Ram is there. Ram is. Guys, I have told you to put mobile number. Ram is also not. He is the only काइलैक one. के 4900 के अराउंड है. 4900 क्या? अच्छा, okay. One second, I have one of the Kushal has put this numbers like. अच्छा नहीं, स्कोडा के नहीं डाले सर, स्कोडा के नहीं. वो ऑटो पंडिट्स पे दिख जाएंगे. If you want to find, go to ऑटो पंडिट्स. मे के भी नंबर्स आ गया गाइस, मे के भी नंबर्स आ गए, कल तक नहीं थे. अच्छा 5000 इट इज डूइंग, ओके. या अप्रैल मे के भी नंबर्स आ गए. सो मे में इफ यू फाइंड स्कोडा, Cadillac is doing is the highest, highest sold product for Skoda. Kushaq भी 600 ही बिकते हैं. तो obviously they are talking of this segment only, कि they are expected to increase their sales from this product only. It's a good thing. मतलब Skoda का भी first time you see this kind of number. You see उसके numbers है वो कितने हैं? 600, 900, 200. This is Kodiaq. Superb तो बंद हो गया, Superb Activa. But Cadillac is doing good. तो पहले 5000 थे ना, 5000 थे. तो obviously we can say 5000 के आसपास they are making. And who at the same point, it is a competitor for Brezza. It is a competition for your Mahindra XUV 300. Iska I think they are not doing good in 300. 7000 they are saving 7000. Hyundai का venue, हाँ. तो जैसे सेम रेंज में सबके सबके सेम रेंज में. एंड इसका वेन्यू सी वेन्यू का वेन्यू इज डिक्लाइनिंग ओवरऑल. सोनेट भी है.
Kia की Sonet. Sonet 8000 कर रहा है. Yeah, Cyrus, this is the new product that I'm talking about. This is also doing good for Kia. Okay, so these things are important. That is why ना वो sector research जो होता है वो important होता है. One news and we are doing so much of research. जबकि Skoda is not even listed in India. So Skoda is going to expand their outlets from 260 to 350 to 60, which was tier 2, tier 3 cities. They anticipate 50% sales from these cities. Yeah, Skoda is going aggressive research. So वही बोल रहा है कि we are वो say they are saying ना 1.8% का 1.3% होगा. Sorry, 1.8 से 3% होगा विशेष. तो we have to think कि अगर इसका बढ़ रहा है तो कौन से कंपनी का डिक्लाइन होगा. Some of the other way. तो मैं बोला कि इसके लिए go and see the competitors की अगर Skylark के सेल्स बढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी के तो कम हो रहा है. दिख रहा है वेन्यू के कम हो रहा है मेजरली, बिकॉज वेन्यू काफी पुराना प्रोडक्ट है एंड कोई ज्यादा अपग्रेड आया नहीं है उसमें. ब्रीजा का अभी एक रीसेंट अपग्रेड आया है. एंड इज इट Skylark के फीचर्स आर बेटर देन क्रेटा, बेटर देन Hyundai के फीचर्स. तभी डोंट कम्पीट क्रेटा ओवर यार. क्रेटा है ही नहीं वो सेगमेंट में. दे आर नॉट कम. कुशाक इज हार्डली मेकिंग 600 यूनिट्स. Okay. Okay, fine. So this, when you say all those things in the interview ना, तो वो फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत कि चलो you are talking something differently than other people जो हमेशा बैलेंस शीट P&L की बातें करते रहते हैं. Okay, sir. So we should see relative growth. हाँ, always relative growth and relative decline, because we always talk about the future. So if one is increasing, other might decline. That's sure. Or when Skoda says that they will increase, is it कुछ हो रहा है क्या? ग्रोथ हो रही है क्या? नंबर्स में चेंजेस आ रहे हैं क्या? मैंने सही ना कि 60%, चलो बढ़ा तो दिया 65% से आउटलेट्स, बट उतने सेल्स बढ़े क्या? तो वो हम मंथली ट्रैक करते हैं. Chayan, you have to tell me about steel sector. Yes. हाँ. So, Indian steel industry has been put by EU, European Union, under other countries, share the pool of 12.5K ton, in which China and Vietnam are also there. So, See, Chayan, your first thing, the statement that you make should be attractive. तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा तुम्हारी न्यूज़ पढ़ने में. What is this? What are you trying to say? so basically, European Union, which is a Chayan, union your of voice is low. 27 bloc countries. Your voice is low. Is it okay now? No, it's still low. Can you be close to your mic? Actually, I'm wearing headphones. Oh, okay. Yeah, so fine. Go ahead. Uh, European Union, which is a 27 bloc union, has given a new rule for the import, in which other countries, India has been put under other countries. It was earlier into individual नहीं शुभ, countries. Chayan, no, what is you are trying to say? एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट. गिव मी अ स्टेटमेंट. तुम न्यूज़ पे चालू क्यों हो रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आया. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? So basically, European Union has changed its import, what to say, import policy. Now, earlier, India was under individual category, in which it could have exported a bigger number of steel product, but currently it is exporting. Uh, it will export a smaller number by sharing 12.5K ton of steel with China and Vietnam. Chayan, इसमें बताओ हेडिंग क्या था और न्यूज़ क्या थी? So basically, the heading was that India has been downgraded from individual to other countries, where it will share a pool of 12.5K ton of steel with including with China and Vietnam, basically. You have written steel industry faces a hit as EU puts India under other countries to share pool of
What is this? What does it means? So basically what will be happening is that India will India which will be put under pressure for steel exports by European Union, India will be under, as it will be limited sorry, uh, under pressure, under what pressure? uh, under export pressure for steel, as it will be only limited to 12.5 k ton duty free steel export. So Shayan, you can say like this, India puts, sorry, puts India under what other countries for what is it? I'm not getting. Indian steel exports are under pressure after European exports European put India under other. हाँ तो ये अच्छा Indian steel exports will be under pressure as European Union puts India and the other countries where a duty free quota where they will share a duty free quota. तो वो बोलो ना Yeah. इंडियन इंडस्ट्री तो क्या होगा तो यू हैव रिटन इंडियन स्टील इंडस्ट्री फेसेस हीट्स स्टील इंडस्ट्री मतलब क्या डोमेस्टिक या एक्सपोर्टर मैं कहता कि ईयू में क्या इंपैक्ट होने वाला है व्हाट इज ईयू व्हेन यू पुट ऑन द अदर कंट्रीज So व्हाट इज दैट तो स्टील इंडस्ट्री तो इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स विल बी अंडर प्रेशर as European Union puts India under other countries category. This should be heading, na? yeah. So why you write all those things like India steel industry face the hit as EU puts? क्या आर्टिकल ये बैनर लिख रहे हो? So you are making a statement. This should be a conversation. Don't use fancy words. ऐसा बात करते हो? मेरे से बात करने हो steel industry faces the point. The way you say this, way you have to write it should be pinpoint. खाली फुकट words नहीं डालने इधर उधर के. And again, same thing you have written again. The Indian steel exports are under pressure after the European Union puts India under other countries. Same heading be same, line be same. And we Yeah, have change. discussed now we should not take uh, companies like ठीक है this is a good news, this is a industry news, but अभी ये news का करोगे क्या तुम? Steel industry will be in focus, correct? It will have a pressure. Now, what is the difference between Tata Steel, JSW Steel, SAIL, and Jindal Steel? You know? Actually, that data was particularly not available. That how much do they export to EU countries? Correct, no? That's what. Yeah. So, ये news का it is good to read, ऐसा ना? It is good to read. But now, what you will do with this next? Do you know how much is the pool for this? It is not even given in the annual report. You Yeah. can even find it. Because the next question, obviously, the next question I will ask, तो बताओ इसका मैं क्या करूँ? शेयर तो इसमें से टाटा स्टील जेएस किसका सबसे ज्यादा शेयर है इसमें? Who is the one who exports to Europe the highest? Basically, Jindal has 25% export, but it is overall export, Overall export, correct. not You will not get that particularly data. to the. That's Yeah. what you will not get that data. It's the problem. Yeah. Easily you will not get. You will find it, but easily you will not get. You have to find it. And same thing, Indian steel industry face the hit as ये सब वापस वही Indian steel exports are under pressure as ये. So this should be a heading, na? This should be adding this change when the India will share. See, same thing you are say this change when the India will now share a limited quota of 125 duty free quota with several countries like China and Vietnam. यही heading हो गया तुम्हारा. This is not this entirely, but you can cut short this heading to one and a half line. And the affected products includes Angel. This should be a sub points. Now, what is the real concern is that with the massive steel export base, if China takes most of the pool quota, India exports could hit the limit quickly. Any exports above 1 ton may attract a steep with making shipment. So this is okay. News was good, but nothing to do with our financial models and research.
We are not talking about steel sector. It is a difficult sector to track. Everything depends on government. अभी कल वापस हटा दिया कोटा, तो there is a good sign. Because this is a very difficult sector, no? Steel commodity sectors are very difficult. Cement, steel, ये सब की न्यूज नहीं लेना है. लेके भी कुछ कुछ नहीं कर पाओगे. It is very difficult to not talk about this all sectors in the interview. What will you do? This doesn't align with our classes. We are not even talking. Do you use steel? Tata Steel का steel खरीदते हो तुम? Do you buy? Not directly. That's what. No, not directly. Then why are you not talking about this product? See, you are an equity analyst. You own, think like as you own the company. You don't even know how much Tata Steel, what kind of steels are made. कितने टाइप के स्टील्स होते हैं? You even know? So I've specifically mentioned not to take companies like commodity companies specifically, where there is no differentiation between products. This all things we are doing not to write, but to use it in our interviews when we go for interviews. So all should be aligned with our financial models. So specifically, I've mentioned only use companies which you know the products, know its competitors, know the pricing of the product, and know who are the people who buy it. Do you know which are the exporters who buy Tata Steel and General Steel products? कौन है? Who are the buyers? यूरोप में बेचते हैं, कौन बाय करता है? That data is a bit difficult to find actually. So then why are you researching on it? You are a commerce student and you are researching about IITs and saying, sir, difficult है मिलना, but I will do research on IIT. क्या करोगे? करके भी करोगे? Are you applying for that role? You also know about cement. Yeah. So that's what cement again. What is the difference between, do you buy cement? No. Okay, buy the cement, which is Ultratech is good or Ambuja is good. So all these things are, which we are talking from interview perspective, all the things you have to talk in, because there will be, follow-up questions of this. Now, how we talk, even how we found for Skoda, Skylac number, it is a competitor of Venue, Seltos. This all general knowledge that we have. Here we don't have any general knowledge. And if you want to doing research, then you have to go deep into it. इतना तो नहीं होगा research. Okay. Yeah. Fine. So try take companies which are easier to understand. Difficult countries will make your life more difficult. Okay, guys. Anyone? I think everyone. Vinit, can you talk? Vinit is not there. Okay, fine. Acha, guys, there was news which Vinit have said that the tier 2, tier 3 cities, just show you. There was some news about the real estate market where no one has written this also. EC cabins mandate to raise truck prices by 1.5%. There is a mandate which government has made that there should be an AC cabin for all the trucks which are being made now. Obviously, it will increase the price as well as the fuel efficiency decline hoga. So again, a problem for commercial vehicles, which is already suffering. There was some news that the supply in tier 2, tier 3 cities have declined. Tier 2 city have declined the real estate supply. Tier 2 cities housing supply falls 35%. Now, Bhubaneswar, Trivandrum, Jaipur and Lucknow. Now, when the supply has fallen, what will happen, guys? Let's say demand is constant, supply decline. What will happen to the prices? This is economics. Prices will increase.
So now tier 1 city is done, you know, Pune, Hyderabad, tier 1, Pune, Hyderabad, Indore, those cities, I think the prices are at steep, it is increasing very fast. Yesterday there was a news that Pune is the lowest, pricing are still lowest in Pune compared to other tier 1 cities. Now we are going into tier 2 cities. So probably, you know, prices are expected to increase for tier 2 cities probably. Now we have to find which are the developers in these cities, because with the interest rate declining to its lowest, housing should improve. Now we have not specifically mentioned which type of housing. That day we discussed that it should be the premium and the luxury houses. But tier 2 cities, usually affordable houses comes around, you know, 50 lakhs to 1 crore. The reports puts a share of launches in 50 lakhs to 1 crore at the range of 48% during that period. So for them, okay, 1 crore is luxury, okay, in tier 1 cities, tier 2 cities. Okay, Gaurav has said, Gaurav, that under the PMY, 3 crore houses are sanctioned, creating long-term demand. गौरव, एक बिल्डिंग बनाने को कितना सीमेंट लगता है? सर ये नहीं पता सर। क्यों, तुम ओनर हो ना कंपनी के, तुमको नहीं पता एक बिल्डिंग बना कितना सीमेंट लगता है? तो ध्यान ही नहीं दिया ये सीमेंट कितना लगता है कितना नहीं लगता। तो फिर ये न्यूज का करूँ क्या मैं? तुम्हारा नहीं स्टेक मतलब वो ओके, ठीक है, नहीं ठीक है, पता होना चाहिए, बट वही है कि हाँ आप जब फॉलोअप क्वेश्चन आएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हाँ सर वही वही। ऐसा है, वो यही प्रॉब्लम होता है इंटरव्यूज में, कि वो अननेसेसरी दे आस्क यू फॉलोअप क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन को फिर वो लोग, तुमको फिर ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ सर ऐसा है। वो तो है। So I was saying that this launches are usually for 50 lakhs to 1 crore prices, you know, at 48% during the period. So this is like वही luxury segment में there is a growth. You see over here specifically they have mentioned ये तो 54 से गिरा, 50 लाख के नीचे गिरा है, एंड यहाँ पे ना ठीक है 2 करोड़, तो इट्स फाइन, बट दिस सेगमेंट इज द बिगर सेगमेंट इन टियर 2 सिटीज. दोज हु स्टे इन टियर, ऑब्वियसली उनके लिए 1 करोड़ इज अ बिग. मुंबई में 1 करोड़ इज अफोर्डेबल. ऐसा है कि 1 करोड़ में गरीब लोग रहते हैं. इंडिया के सब, मुंबई की सबसे मिडिल क्लास पीपल स्टेज इन 1 करोड़ हाउस. मिडिल और लोअर मिडिल क्लास एट टाइम्स. 1 करोड़ भी अभी बहुत महंगा हो गया मुंबई में. इन मेट्रो सिटीज, tier 1 cities is still fine. 1 crore is said to be a little bit premium housing, but tier 2 cities तो वो luxury housing ही हो गया. Now see which companies are making, you know, properties in tier 2 cities. That is why you need to understand all the real estate sectors कि ये कहाँ पे इनके projects चल रहे हैं. So just, you know, just do a ground research, not ground research, let's say Google that which are the tier 1 tier 2 cities in India. कौन से होते हैं. यहाँ पे दिया तो है लखनऊ जयपुर. टियर 1 में कौन से आते हैं बोले, मुझे जो पता है हैदराबाद पुणे ही आता है. हैदराबाद पुणे और कौन से बैंगलोर भी है. नहीं, बैंगलोर इज अ मेट्रो सिटी. इज फाइन ऐसे ही फॉर जनरल नॉलेज. which are the tier 1 cities, tier 2 cities. One question was asked to me in interview, how are these cities defined? ये tier 2 का मतलब क्या है? Radhika Sejal, just do this. Metros, what are metro cities in India? What is tier 1 cities, tier 2 cities, and how are they defined? Okay, sir. मेट्रो क्यों बोलते हैं, टियर 1 क्यों बोलते हैं, टियर 2 क्यों बोलते हैं? ओके, जस्ट डू इट, मेरे को भेजना ना बाद में. Okay guys, thank you. We'll see you tomorrow in the class 10:30. Okay, there will be a short introduction because others are also joining from tomorrow. So वही वापस ये बताऊंगा कि न्यूज एंड ऑल, हाउ टू राइट इट एंड ऑल, एंड देन विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल मॉडलिंग टुमारो. बेसिक ऑफ मॉडलिंग क्यों बनाना होता है, हाउ द बैलेंस शीट्स एंड कैसे फर्क होता है दोनों में, एंड ऑल दिस स्टफ. ओके, okay guys, thank you, have a nice day, see you tomorrow. Sir, just one more. हाँ चलिए. Sorry, yeah. I sent you something on WhatsApp actually.
अभी भेजा? नहीं, 2 days ago, a report sort of thing. अच्छा, okay, fine, ठीक है. When you send Should I resend it or like? HUL का? हाँ हाँ हाँ. ओके, वन सेकंड. ये क्यों भेजा तुमने? ये क्या भेजा? ये भेजा तुमने? हाँ. ये मैं मुझे बोला कि रिपोर्ट बोलना था ना मैं I भेजने. am. No, I just wrote something. I asked you if it is okay and I should move forward or like. नहीं नहीं, दिस इज नॉट. सी, पहले तो आई सेड ना इट शुड हैव एन हेडिंग. हेडिंग की तरह एक भी इसको हेडिंग नहीं है. आई एम ओनली गोइंग टू रीड योर हेडिंग. नथिंग इज बिन बोल्ड. एंड ये तो यू हैव टू डू दिस 1 hour आफ्टर द कॉन्फ्रेंस कॉल. इट शुड बी दैट फास्ट. Okay. अगर कॉन्फ्रेंस कॉल ही लिखना है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट. देयर इज ऑलवेज अ क्वार्टरली अपडेट रिपोर्ट. कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स होते हैं which you have to do 1 hour after the call, because now this highlights has no meaning because many things have changed. ठीक है, तुम लिखा है, it's no problem, but see, it should always, without formatting ना, your reports have no value, because see, no one is going to read this, क्योंकि अभी already हो चुका है ये सब चीजें करके. You are already late. Now what will people look at? Is this person know how to write it? मैंने इसको कुछ लिखने बोला है, तो can he frame it in a better way? Can he make it a format? Can I send this to a client? You tell me, can I send this to a client? मैं बोला ये पढ़ो तुम. भेज सकता हूँ. तुम्हारे पेरेंट्स को भेजो और बोलो हाँ. ये पढ़ने को, एंड इन्वेस्ट फ्रॉम दिस. विल दे रीड इतना कुछ? No. No. थिंक इन दैट वे कि यू हैव टू सेंड दिस टू समवन एंड यू हैव टू मेक हिम बाय द स्टॉक. उसके लिए तुमको कितना अच्छे से लिखना पड़ेगा. पहले तो वो पढ़ना चाहिए कि ना, मेक हिम राइट, मेक हिम रीड समथिंग. इसमें मैं रीड क्या करूं? एंड हाउ विल यू प्रूव योर इंटीग्रिटी कि सर इट इज एक्चुअली वर्थ रीडिंग इट? बुक्स गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स, तो बुक्स में वी रीड एज पर द ऑथर्स. एक ऑथर अच्छा होगा तो हम रीड करते हैं, और एल्स व्हाट वी सी द फर्स्ट ऑन द बुक. पता है, वी ऑलवेज सी द इंडेक्स. कुछ अच्छा लगा तो पढ़ते हैं. योर इंडेक्स इज योर हेडिंग. द मोर अट्रैक्टिव यू मेक कि अरे वाह ऐसा कुछ हुआ है, अच्छा लेट मी रीड क्या हुआ है. एक्चुअल का प्रॉफिट गिरा है, प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स बढ़े हैं. व्हाट इज द रीजन दैट सेल्स बढ़े? व्हाट इज द रीजन के गिरे हैं? ओके. Okay, sir. Okay, guys. Okay. Thank you guys. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you.